Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss another very interesting topic, that is morphology of viruses. So let's move to the class board. So dear students, now the morphology of viruses. So as far as the morphology means आपने पढ़ा हुआ है, the branch of biology that deals the study of appearance or the forms or structures. जो apparent structures होते हैं उसको हम morphology कहते हैं. उसको हमने डिवाइड किया था एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में भी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी यानी एनाटॉमी के अंदर भी. तो यहाँ पर हम बेसिकली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, यानी कि फॉर्म्स एंड अपीयरेंस के दिखने में वायरसेस किस तरह के होते हैं. तो हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. Number one is the animal and plant viruses. And number two are the bacteriophages. Clear? So as far as the animal and plant viruses are concerned, they might be polyhedron, or polyhedral means having many faces, and the other the morphology of the plant and animal viruses, it may be the helical, that means the spiral in shape like the spring. Clear? तो spiral, या फिर they may be enveloped or complex. Yeah. So these are the three morphological features or morphologies of animal and plant viruses. But as far as the bacteriophages are concerned, so what are bacteriophages, dear students? The virus which infect or eat bacteria are called bacteriophages. So the bacteriophages, they have two morphological forms. They have got two morphological forms. Either they are cubical or helical. The cubical phages, they are solid icosahedral. Icosahedrals mean having 20 faces, while the helical phages, they are rod shaped. They are rod shaped. Clear? तो डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज के लिए आपने नोट कर लेना. आइकोसाहेड्रल का मतलब होता है हैविंग 20 फेसेस, और पॉलीहेड्रल का मतलब होता है मैनी फेसेस, जो कि एनिमल वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है. बैक्टीरियोफेजेस के अंदर जो क्यूबिकल है, दे आर सॉलिड. क्लियर?
अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी, सो जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो उनके अंदर हेड और टेल मौजूद होती है. इफ देयर इज प्रेजेंट हेड, द बैक्टीरियोफेजेस have a head and a tail. आगे चलकर इसका स्ट्रक्चर भी डिटेल से स्टडी करेंगे हम बैक्टीरियोफेज का. And head and a tail, in which in these cases the head is polyhedral and the tail is rod or spiral shaped, here helical shaped, which we can say. So in our book there is given a morphology of various viruses. मुख्तलिफ तरह के एनिमल और प्लांट वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस की कुछ मॉर्फोलॉजी एक टेबल की शक्ल में गिवन है, उसको भी हम देख लेते हैं. ठीक है. So this is the structure of vaccinia virus. This is vaccinia virus, which belongs to the family of pox viruses. Clear? तो जितने भी जो pox viruses की family है, like small pox और ये उनको belong करता है. ठीक है. It is a pox virus. और हमने पढ़ा भी था it is one of the largest viruses. जो सबसे largest virus है वो pox virus है. ठीक है. With a diameter of 250 nanometers. Now the next one is so that is a DNA. This is paramyxovirus. Clear? And it usually causes mumps. आगे चलकर डिजीज़ में पढ़ेंगे भी मम्प्स को. कनपेड जिन्हें कहा जाता है, ये वायरल इन्फेक्शन है यहाँ पर. सो इंशाल्लाह इसकी डिटेल आगे आएगी. तो ये पॉक्स जो है स्मॉल पॉक्स वगैरह ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन there is another virus. This is actually the herpes virus. Here. So that is herpes virus. So it causes various diseases like herpes simplex. Clear? It is also sexually transmitted disease. Humans के अंदर होती है. So it is also a serious disease causing agent.
Here is another virus. This is called as orf virus. It causes usually infections in goats and cattle. उनके बड़े बड़े वो उसमें लेजन्स बन जाते हैं इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर, इन द फेस खास तौर पर, और अंदर वाले जो ओरल कैविटीज़ हैं और स्किन के ऊपर भी. सो इट इज़ रिलेटेड टू द कैटल्स. क्लियर? गोट्स वगैरह या इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनमें इन्फेक्शन कॉज करता है ऑर्फ वायरस. क्लियर? Then there is a bullet-shaped virus. It is actually the rhabdovirus. It is rhabdovirus. It is responsible for serious CNS infection. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बुलेट शिफ्ट होता है, रॉड शिफ्ट रैप्टोवायरस. क्लियर? तो इसको आपने वो वायरस हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस रेबीज के लिए, उसके साथ इसको मिक्स नहीं करना. ठीक है? दैट इज समथिंग एल्स. इसी तरह से देयर इज अनदर वायरस. Like this. This is actually the influenza virus. ये बेसिकली जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं, खांसी, नज़ला, बुखार वगैरह, ठीक है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लुएंजा वायरस. So that is its morphology. Next is this is what we call as the T-E1 coliphage. ये कॉलीफेज मतलब कि ये फेज वायरस है, मतलब कि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. क्लियर? इट्स अ टिपिकल बैक्टीरियोफेज. इसी तरह से एक और फेज वायरस which is given in our book. That is flexuous tail virus. It is flexuous tailed phage. Actually, it is also a phage virus. Clear? मतलब ये भी बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है. इसी तरह से एक और जो है that is given in our book, that is
only the head containing, this is polyomavirus. Polyomavirus that actually causes tumors. ये ट्यूमर कॉज करता है, कैंसर कॉजिंग है, क्लियर। इसी तरह से एक और इसी शेप का छोटा सा हेड शेप्ड एक और भी है, इससे थोड़े साइज में छोटा होता है। That is known as picomavirus. It is picomavirus, which is usually involved in the infections of the CNS, especially it causes the paralysis, ठीक है। ये पैरालिसिस के यानी कि जो फालिज के अटैक जो होते हैं वो इससे हो सकते हैं। Another is over here a complete rod-shaped virus, which looks like simple a rod. So that is known as the tubulovirus. Clear? It is just a rod, a simple rod-shaped virus. Clear? So, dear students, it could be asked in your long questions. आमतौर पर इसमें से MCQs तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। जैसे कि एनिमल और प्लांट वायरसेस कौन कौन सी उसकी मतलब के कैटेगरीज हैं, पॉलीहेड्रल हैं, हेलिकल हैं और एनवेलप्ड है। Bacteriophages means the bacteria eaters, the bacteria infectors. उनके दो morphological forms, cubical and the helical. जो cubical होते हैं, they are solid icosahedral. बार बार आपको इस पे फोकस कर रहा हूँ कि ये important MCQ है। Icosahedral का मतलब है having 20 faces. That is an MCQ. Having 20 faces. और helical का मतलब that is a rod shaped. Clear? और जहाँ तक बात है कि आगे ये वाला जो पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज गिवन इन आवर बुक। इनके डिजीज के वाले से भी मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है वो गाइड कर दिया, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस, क्योंकि ये बुक के अंदर गिवन है तो आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ देयर इज नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियोफेज, जो हमने इससे पहले लेक्चर में भी ड्रॉ किया तो था, लेकिन वहां पर इसकी इतनी ज्यादा डिटेल नहीं थी। यहां पर इसकी मजीद डिटेल में आएंगे। बेसिक पार्ट्स तो वही रहेंगे, ठीक है, बैक्टीरियोफेज के, लेकिन कुछ और इसके अंदर इंटरनल मतलब कि मजीद कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने जिस बैक्टीरियोफेज के ऊपर काम किया वो यूजुअली दे यूज्ड टू इन्फेक्ट द ई कोलाई। The researchers worked on the E. coli, that is Escherichia coli, clear? Because the phages, means the viruses which attack or which infect E. coli are easy to study. Among the phages, जो phages यानी कि जो हमने जो रिसर्चर्स ने स्टडी किए, among the phages means के बैक्टीरियोफेजेस, फेजेस आमतौर पर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बैक्टीरियोफेज को। among these phages यानी कि फेज वायरसेस T2 and T4, the T is equal to type. T stands for type. So type 2 and type 4 जो phages हैं are frequently studied. Clear? ये MCQ इसके लिए याद रखना, ठीक है।
T2 and T4. So usually a bacteriophage, it consists of a head and a tail. A head and a tail. So like this is the head. और इसी के अंदर मौजूद है डबल स्ट्रैंडेड DNA, जो ऊपर उसका प्रोटीन कोट, उसका कैप्सिड। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आगे मुकम्मल ड्रॉ क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे यहाँ पर एक डिटेल बताने वाला हूँ। तो ये तो इसका हो गया हेड। अब जो हेड से निकल रही है टेल, जो हेड है दैट इज बेसिकली दिस इज द हेड which is usually आपको देख रहे होंगे, इट इज हेक्सागोनल, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल, 6 कोनों वाला। जैसे बेंजीन होता है, बेंजीन आपने देखा ना उसका रिंग, इस तरह से बेंजीन रिंग, दैट इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, दैट इज बेंजीन। इसी तरह से इसका ये हेक्सागोनल हेड जो है, इट इज हेक्सागोनल। एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा ये प्रिज्म शेप्ड है, प्रिज्म देखा आपने फिजिक्स के अंदर, वैसे ग्लास सा, ऐसे ट्राइंगल सी, और वो 3, अगर आप डायमेंशनल में चाहें तो इस तरह से, इसी तरह से इसकी वो शेप है, प्रिज्म शेप्ड इसका हेड। हमें भी सिर्फ इसकी हेड की क्वालिटीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड हेक्सागोनल प्रिज्म शेप्ड। अब अच्छा, इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, द टू ट्राइंगल्स विद अ कॉमन बेस, 2 ट्राइंगल्स हैं और उनमें कॉमन बेस स्ट्रक्चर ये इसके ऊपर मौजूद है। जैसे कि लाइक दिस, ये देखिए, इसको गौर से देखिएगा प्लीज। जैसे कि एक ये ट्राइंगल और इसके नीचे ये एक ट्राइंगल, और इन दोनों की बेस क्या यहाँ पर कॉमन है। ये वाला स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद है, इसके हेड में। यहाँ पर देखिएगा, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों की जो बेस है वो कॉमन है। इस तरह से इसके अंदर जो ट्राइंगल्स, ये जो ट्राइंगुलर जो शेप बन रही है, उसमें जो ट्राइंगल्स हैं, उसमें जो 2 ट्राइंगल्स होती हैं, दे हैव अ कॉमन बेस, ठीक है। टू ट्राइंगल विद अ कॉमन बेस स्ट्रक्चर, ये इसके अंदर मौजूद है। यह भी हम सिर्फ इसके हेड को स्टडी कर रहे हैं, क्लियर, ओनली द हेड। और फिर इसके अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक, इट हैज गॉट डबल स्ट्रैंडेड DNA, इनके अंदर सिर्फ DNA होता है, ठीक है। जो बैक्टीरियोफेज की हम बात करें तो दे हैव गॉट डबल स्ट्रैंडेड DNA which is enclosed in a protein coat which is called as capsid, which is called as the capsid, clear। So आज के लिए सिर्फ यही, इसका हेड ही स्टडी करेंगे, क्योंकि जो टेल है इसकी वो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो फिर देखते हैं इसके बाद। तो ये आपको हेड के कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।